So good morning, sweet more earning, all divine angels. We are on chapter 12 of this wonderful book, Becoming Supernatural by Dr. Joe Dispenza. So what I'm doing, I'm just summarizing what we have read so far, and then we'll take over from there. So what we read so far is in this particular chapter is which is all about the pineal gland. और pineal gland हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे मानते हैं कि वहीं पे है जहाँ पे हमारे जो आत्मा है वहीं पे बैठते हैं, उसी के आसपास बैठते हैं. एंड it's a wonderful miracle gland. So I'm just reading out some information which I picked up to summarize this whole conversation. So the pineal gland as a mystical organ. The pineal gland is not just a tiny gland nestled in the brain. It is your inner antenna, designed to tune into frequencies beyond the material world. So it connects the material world and the spiritual world, or non-material world, we can say the energy world. The connection between the material world, which is there with our body, and the connection with the rest of the universe is there through this pineal gland. When the pineal is properly activated, it allows you to perceive beyond your senses, experiencing profound unity with universal intelligence. By aligning elevated emotional states with intentional focus, you begin to awaken the latent capabilities of this organ, shifting from the known into the unknown and making the invisible not only visible but also experiential. So invisibles are, like, you can consider them as your feelings. कि आपने कैसे सीखा, कैसे जाना कि एक्साइटमेंट का फीलिंग ऐसा ही होता है, या एनकरेजमेंट का फीलिंग ऐसा ही होता है, मोटिवेशन का फीलिंग ऐसा ही होता है, इंस्पिरेशन का फीलिंग ऐसा ही होता है. हाउ डिड यू लर्न? ये तो हमें कहीं दिखा नहीं ना. वी कांट सी इट विद आवर आईज. वी कांट इवन एक्सपीरियंस इट थ्रू एनी ऑफ आवर अदर ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स. Then how do we learn? This is what is being talked about. That by aligning elevated emotional states with intentional focus, you begin to awaken the latent capabilities of this organ. Latent capabilities means इसके छुपे हुए सारे जो capabilities इसके अंदर है. Latent ones, they are all there but you can't see it, like latent heat, है ना. जब water transforms into ice or water transforms into steam, दोनों का ही temperature same होता है, लेकिन state कैसे बदलता है? क्योंकि वो latent heat exchange होता है, छुपा हुआ heat. It is there but you cannot see it. Often you cannot even measure it. So you begin to awaken the latent capabilities of this organ, shifting from the known into the unknown and making the invisible not only visible but also experiential. So you start see these the feelings of these words. आपको actually दिखता है, हमें कुछ भी आंख से नहीं दिखता है. By the way, this our eyes only work as a pinhole camera. That's it. It only picks up the frequencies which is in the visible range. Visible range के बाहर का जो frequency our eyes cannot pick them up. So eyes खाली light pick कर रहा है. It is only picking up the photons which is coming from different reflected objects. What is happening is all happening inside the brain. So हम जो भी देखते हैं ना अपने आंखों से नहीं देखते हैं. The visibility happens inside the brain somewhere. सारा central processing unit वहीं पे है. It is only receiving the data using these organs that we have, sensory organs. उससे वो data कम से कम 5 set of data वो उठा सकता है, which can be picked up by these organs as far as they are in that range.
फ्रीक्वेंसी जब उस रेंज के बाहर चला जाता है, वी कैन नॉट एक्सेस देम. जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी यू एंड आई कैन नॉट एक्सेस, है ना, उसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए विच कैन एक्सेस ओनली रेडियो फ्रीक्वेंसीज. इन दैट वी कैन, that is the only where we can pick up those frequencies and we can also play them. उस फ्रीक्वेंसी को हम अपने और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके उसको हम एक रूप दे सकते हैं, जिस रूप को हम देख सकते हैं. Like even the sounds is also you can see. If you can close your eyes, you can see the sounds also. Even if your ears are not working, you can still listen to the sounds. है ना, क्योंकि everything we store in our brain as an internal representation, and that internal representation is a combination of all these experiences which we can see with our inner eye. So that's why it is being said, okay, you not only shift your from the known into the unknown, but it also helps you to make it visible, make that invisible visible but experiential. तो आपको दिखना शुरू हो जाता है कि प्रोबेबली इंस्पिरेशन का मतलब यही है. सो यू कैन सी द इंस्पिरेशन विद योर इनर आई and then you experience it. And that's why every word that we use in our communication, we bring the experience, the feeling, the emotions associated with that word into that conversation. Imagine when you use the word ma, your mother, your papa, your father, what happens? You bring the experience, bring the feeling, the emotions attached to that word into that conversation. And every word that we have learned till date is being stored inside our brain as an emotion, as a feeling, as an experience. Okay, so let's move to the next step, which is crystals within the pineal gland. Inside the pineal gland are tiny calcite crystals that behave in a piezoelectric way, meaning they emit an electrical charge when compressed, when you use breath and focused intention to create pressure within the cranial cavity. Now, cranial cavity, if you do not know, don't need to know much. It is just somewhere inside the brain जहाँ पे हमारे सारे cranial fluids रहते हैं. Brain के अंदर जो भी fluids होते हैं, वो fluids जहाँ पे रहते हैं. So when you use your breath and focused intention to create pressure within the cranial cavity, these crystals begin to vibrate and send coherent signals through the brain. मतलब आप जैसे सोच रहे हो, जैसे प्रेशर डाल रहे हो, उसी के हिसाब से वो वाइब्रेट करते हैं एंड उसी के हिसाब से वो सिग्नल्स पूरे ब्रेन में छोड़ना शुरू करते हैं. दिस मेक्स द पिनियल act like a radio receiver, tuning into higher frequencies of the quantum field. The more consistent your elevated energy, the clearer the signal. This is where biology meets energy, and your inner world starts to become more real than the outer, ushering in the supernatural. Okay? So supernatural world क्या है? जो आपके natural world के बाहर है. That part of the cosmic energy which is beyond access to your normal senses. And how it happens? Because this pineal gland उसके अंदर calcite crystals हैं, and these crystals are they can create, they behave like a piezoelectric effect. They creates a piezoelectric effect. Piezoelectric effect क्या है? इनके ऊपर जब प्रेशर आता है तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट होता है. And whatever pressure you're putting in, it creates electromagnetic radiation similar to that pressure or equivalent to that pressure. And as it does that, it picks up the frequencies which is around you. हमारे चारों तरफ जो क्वांटम फील्ड है वहां पे जो फ्रीक्वेंसीज है ऑल देयर अराउंड अस, राइट. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप किस वक्त कौन सा फ्रीक्वेंसी को या फ्रीक्वेंसी के साथ आप रेजोनेट कर रहे हो. जो भी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करोगे वही आपको फील होगा, एंड यू कैन pick up those, or you can send those frequencies and resonate with them. This is how, you imagine that you are in a concert and say Jagjit Singh आप concert में हो और वो गाना गा रहे हैं. So what is happening?
वहां पे जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन आपको इम्पैक्ट कर रहा है. Now, when you elevate yourself into that vibration, then you enjoy those soulful songs. अब वो elevation लेके if you attend a rock star performance, you cannot connect because आपको अगर rock star performance को enjoy करना, you have to elevate your frequencies at that level. उसका frequency अलग है, and when you do that, then you can connect to that also. So this is what the pineal gland does as a radio receiver. Now comes the second quality of pineal gland, which is transducing dimensional information. The pineal gland serves as a biological transducer. अब transducer क्या? It's a device that converts energy into information. अब ये उल्टा हो गया, energy into information. When activated, it receives coherent data from the quantum field, collapsing it into visions, symbols, inner knowing, or direct insight. तो नाउ ये क्या कर रहा है? ये हमारे चारों तरफ जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो वहां से मैसेज ले रहा है, वहां से वो कोई सिग्नल उठा रहा है और उसको इक्विवेलेंट विजन, सिंबल या इनसाइट में कन्वर्ट कर रहा है. So converting that signal into information. See, that's how we have learned all these things which we cannot see. हमारे जितने फीलिंग्स हैं ये हमने कैसे सीखा? ऐसे ही सीखा. Because the vibration of those feelings were already around us. Somebody told us they, you know, like when you look at a baby, you'll always feel happy. So when you look at pictures of babies, you discovered, oh अच्छा, ये जो फीलिंग मुझे अभी हो रहा है ये हैप्पीनेस वाला फीलिंग है, इसका नाम है हैप्पीनेस. And then when that got repeated, you confirmed, you reassured, you reignited it कि हाँ यही हैप्पीनेस का फीलिंग. And that's how you converted those frequencies into information and then you stored it inside your brain. That's how we do it. Pinaki, I have one question. Don't ask any question right now, just listen. मुझे समझ नहीं आया अभी ना. अभी क्वेश्चन पूछो ही नहीं, अभी सुनो. I'm coming there. Pay attention to whatever being said. So now it is working as a transducer. Transducer का काम क्या है? As I just said, कि it converts the energy into information. तो हमारे चारों तरफ जो भी energies हैं, जो भी frequency में vibrate कर रहे हैं, as we capture those frequency, this gland automatically converts it into information, and that's how we receive all the information. इसीलिए this is the only reason that why we have different definition about different words. Whenever we think of any word, it has a different definition because हम अपना जो pineal gland है उसने उस information, उस frequency को जैसे information convert किया वही information हमारे पास है. And incidentally, the funny point is that we believe that this is right. हम believe करते हैं कि हाँ यही इसका मतलब है. And we bring that belief into our conversations. So when activated, it receives coherent data from the quantum field, collapsing it into visions, symbols, inner knowing, and or direct insight. You begin to access non-linear realities. Non-linear reality का मतलब यह है कि मुझे जो normal sense में समझ में आता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. This is something beyond. हम like कैसे यूनिवर्स फंक्शन कर रहा है, कैसे यूनिवर्स में एक हारमोनी है, and you and I have no access to it. We can only think about it. Probably ऐसे है. So as we activate our pineal gland with full conscious awareness, there is a possibility that we can get access to those non-linear realities. That is stepping beyond space and time. Whatever is accessible to us right now is all about space and time. स्पेस है नहीं, जो स्पेस आपका बॉडी ऑक्यूपाई कर रहा है, और टाइम क्या है? जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते हो, द गैप बिटवीन दैट इज बीइंग डिफाइंड एज टाइम. नाउ दीज डाउनलोड्स, ये जो अभी
इंफॉर्मेशन एनर्जीज हमने कन्वर्ट किया और उसको हमने डाउनलोड किया विद दिस pineal gland often come as profound understandings, spontaneous healing और moments of awe. हम हैरान हो जाते हैं, अरे यार ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है ना. वी लुक एट से जैसे सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है. Many times we feel awe that how these things are happening. What is the power of nature? You look at a flower and it has so many multiple colors. You look at a bird with so many multiple colors, and you keep on experiencing that superpower of the nature. So your conscious mind, typically limited by the senses, expands to perceive higher dimensions. This is how ancient mystics and modern meditators alike describe contact with higher intelligence. It's the pineal which is translating infinite frequency into intuitive wisdom. तो आप जो भी विजडम कहीं भी से रिसीव कर रहे हैं या बना रहे हैं वो आपका खुद का है, एंड there is no possibility that it will match with each other. जैसा अभी मनीष मेरे को पूछ रहा है, I have a question. Naturally, he will have a question. All of us have questions. Even I also have questions when I'm reading this. क्योंकि ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जहाँ पे मुझे भी लग रहा है यार ये तो surreal है. How is this possible? Does it really work like that? There are certain things which even I find difficult to understand. And this is happening with everybody around us. It's not that Manish is an exception or I am an exception. None of us are exceptions. It's all how our pineal gland is working. Yes, Manish. Now you can go ahead with your question. My question was, you said na कि now it is the reverse of the previous one. कि हाँ, how, yeah, I didn't get that. Like, transducer, transducer. Yeah. So that is what is saying that pineal gland जो है वो रेडियो रिसीवर की तरह भी काम करता है एज एन एंटेना. जैसे सिग्नल छोड़ रहा है, एंटेना का पर्पस हमेशा सिग्नल लेना नहीं है, बाय द वे. सिग्नल छोड़ना भी एंटेना का ही काम है. देयर आर मेनी एंटेनास जिसका काम ही है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन छोड़ना. एंड देयर आर अनदर सेट ऑफ एंटेनास जिसका काम है वो फ्रीक्वेंसी को लेना और उसको इक्विवेलेंट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना. सो व्हेन यू सेंड द सिग्नल्स, then you are sending the vibrations out in the quantum field around you. और जहां जहां पे वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेट कर रहा है वहां वहां पे आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं. यू फाइंड पीपल अराउंड यू. दैट्स व्हाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट like attracts like, like attracts like. वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मतलब आपने फ्रीक्वेंसी छोड़ दिया, आपका सिग्नल छोड़ दिया इन द ईथर अराउंड यू, इन द क्वांटम फील्ड अराउंड यू. वहां पे वो सारे सिग्नल्स ऑलरेडी है, वो सारे फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी है. यू आर ऑलरेडी सराउंडेड विद द कंप्लीट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच इज अवेलेबल. उसमें से जिस भी फ्रीक्वेंसी के साथ आप उस वक्त रेजोनेट कर रहे हो, यू आर increasing the intensity of that frequency, of that vibration, and that creates a whole difference, you know. जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप खुद मेडिटेट करोगे तो वहां पे आपको इम्पैक्ट कुछ और होगा, एंड व्हेन यू आर मेडिटेटिंग विद 10 अदर पीपल इन द सेम रूम, इट क्रिएट्स अ डिफरेंट वाइब्रेशन. उसमें क्या होता है कि एवरीबॉडी इज वाइब्रेटिंग ऑलमोस्ट एट द सेम फ्रीक्वेंसी, एंड नाउ दिस वाइब्रेशन इंटेंसिफाइज. And as it intensifies, now you are also, since your pineal gland is also works as a receiver, as a transducer, अब वो सारा इंफॉर्मेशन भी अपने साथ लेता जा रहा है, और उसके आसपास के भी जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ वो रेजोनेट करना शुरू हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई यू स्टार्ट फीलिंग more into the same kind of experience when you are working together in a group. है ना. इसीलिए जैसे मान के बोलते हैं जोर लगा के हैश, एक गाड़ी को धक्का मारना है, उस अगर आप नॉर्मली धक्का मार के शायद आप उसको मूव भी नहीं कर पाओ. बट व्हेन यू आर यूजिंग दिस स्टेटमेंट जोर लगा के है या कुछ भी उस तरीके के वर्ड्स आप यूज करते हैं तो क्या होता है, यू आर वर्किंग बोथ एज अ एंटेना एज वेल एज अ ट्रांसड्यूसर. आप वो एनर्जी जनरेट कर रहे हो, and then everybody is generating that energy at their own frequencies, and you start connecting to those frequencies as well. That increases the intensity of that vibration. As a result, you can put a higher force to move that vehicle or move that object.
This is exactly what Joe Dispenza is talking about, that how it works. You got it? Yeah, actually, can you give one example? जैसे क्या है ना कि see, I have some thoughts and feelings right now. ठीक है, तो वैसा ही I am sending the same message to the universe, which is acting as a receiver. ठीक है, Hmm. जो Hmm. मेरा frequency है उसी हिसाब से like emitting the same kind of frequency back to me. Hmm. ठीक है ना? तो you said कि भाई अब ये रिवर्स हो गया उसको. Can you give one simple example? थोड़ा मुझे यूनिवर्स यूनिवर्स कुछ जनरेट नहीं करे, यूनिवर्स को तो ऑलरेडी वो फ्रीक्वेंसीज है. It's only your pineal gland which is either receiving those frequencies and converting it into information, or you are sending those vibrations, sending those frequencies outside your body. तो जब आप रिसीव कर रहे हो, देन यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट. जब आप रिसीव, तब आप छोड़ रहे हो, तब आप किसी और को एक्सपीरियंस करवा रहे हो आपके आसपास. इफ देयर आर पीपल अराउंड यू, देन दे कैन आल्सो स्टार्ट रिसीविंग दोज information. Like for example, we are reading this book together. Now had we not been reading this book together, we couldn't have experienced what we are experiencing right now. है ना? Whatever I am saying from my own experiences. Whatever I am experiencing, I am sharing it with you. वो एक अलग वाइब्रेशन में मैं आप तक छोड़ रहा हूँ, मैं क्वांटम फील्ड में छोड़ रहा हूँ. उसमें से जो जो आप पिक कर पा रहे हो इस वक्त, उसी को आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हो. सो एवरी वर्ड दैट आई एम यूजिंग इज क्रिएटिंग अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. उसमें से जो जो फ्रीक्वेंसी के साथ आप आपका जो पीनियल ग्लैंड है, वो उसमें से जो जो फ्रीक्वेंसी को उठा रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी को वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है. एंड दैट इज द मैसेज दैट यू आर गेटिंग. So you, what the message that you are getting is based on the frequencies that your pineal gland is picking up from whatever I am saying, and vice versa. Got that? one second. नहीं, see, let me tell you what I am understanding. ठीक है, I am Hmm. sending some frequency to the universe. ठीक है, तो Hmm. the universe is responding back according to that frequency. It is responding to me the same kind of information which is aligned with my frequency, right? हाँ, वो आपको नहीं दे रहा, आप उठा रहे हो. हाँ भाई, मतलब आई एम आप एबल टू ही दे रहे हो, सिग्नल आप ही छोड़ रहे हो, और सिग्नल आप ही पिकअप कर रहे हो. यस, गो अहेड. pick that the information like as per my frequency, right? See, ठीक है, तो ये तो होगा. you are sending out whatever you are sending out. या. Those frequencies are already there around you. It is हम्म. getting vibrated. आप क्या रहे हो, उसके एसोसिएटेड और भी फ्रीक्वेंसीज हैं, which your pineal gland is also receiving back, and it is translating into an information as per your experiences so far. See, let me give you one example. जैसे if I'm working on on a assignment basically, ठीक है, Hmm. I'm writing a code, ठीक है, Hmm. तो I'm working on assignment, तो I'm I'm deeply my emotions and my feelings are very strong. Like it just I'm at a very elevated experience कि ठीक है, I'm very confident, I'm high in emotions, positive feelings, all that. ठीक है, तो उससे क्या है, मेरा frequency भी high रहेगा, right? तो frequency high रहेगा तो I'm able to tap any knowledge outside me. ठीक है, थ्रू माई दैट द फ्रीक्वेंसी दैट आई एम सेंडिंग टू द यूनिवर्स. तो मेरे मन में कुछ आइडियाज आएंगे कि ठीक है, लेट मी गो टू गूगल या लेट मी टॉक टू अ फ्रेंड, या कुछ और आइडियाज आएंगे दैट वर नॉट विद मी बिफोर, राइट? Hmm. Hmm. लेकिन आई एम एट दैट एलिवेटेड फ्रीक्वेंसी, सो आई एम एबल टू थिंक आई एम एबल टू टैप टू दैट इंफॉर्मेशन दैट आई एम लुकिंग फॉर. ठीक Hmm. है, कि Hmm. मैं पिना को कॉल करता हूँ या वट एवर इट इज, ठीक है, जिससे मुझे Hmm. वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड आई एम एबल टू डू माई वर्क. ठीक है, एक तो ये हो Hmm. गया. Hmm. तो द अदर थिंग दैट यू सेड कि भाई अब ये रिवर्स होगा, तो रिवर्स वाला मुझे पॉइंट समझ नहीं आया. यू सेड ना कि अब ये उससे रिवर्स वाला उल्टा. पॉइंट मनीष ये है कि जो मैं कह रहा हूँ, वट हम्म. एवर आई एम सेइंग, उसमें से आप जो इंफॉर्मेशन उठा रहे हो, अच्छा, जैसे लेट्स आप. से फॉर, या हाँ. हाँ. मतलब मैं सो. कह रहा हूँ लेट्स से आई गो टू गूगल, और मुझे जैसे होता है ना कि इन कोडिंग वी गो टू गूगल, तो कुछ ना कुछ उसमें अपने को एक सूडो कोड मिलता है, कुछ आइडियाज मिलते हैं, ठीक है, तो उससे वी करेक्ट. यूज दैट दैट snippet of like code, we use that in our main code and just get our job done, है ना?
कुछ ना कुछ एपीआई रहता है, वो सब रहता है, ठीक है। या करेक्ट करेक्ट। या तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि भाई आई एम एबल टू कनेक्ट टू दैट इंफॉर्मेशन, एंड दैट इंफॉर्मेशन, थ्रू दैट इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन दैट आई नीड टू डू टू कंप्लीट माय वर्क, ठीक है। वो मुझे इंफॉर्मेशन मिल गया, एंड यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन आई एम एबल टू फिनिश माय वर्क, राइट। राइट। हाँ। अब यू सेड कि भाई अब वो उससे उल्टा हो गया, मतलब वो उल्टा वाला लॉजिक थोड़ा आई एम स्टिल मिसिंग ऑन दैट। सी वन इज यू आर सेंडिंग आउट मैसेज, जैसे अभी आप मैसेज दे रहे हो, हाँ, तो भी आप बोल रहे हो दैट यू आर सेंडिंग आउट इन द यूनिवर्स। ठीक है। ठीक है, उसमें से जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट नाउ। बोथ these activities are being done by the pineal gland. सो आप जो भी बातें कर रहे हो, जो भी मैसेज आप छोड़ो, उसका एक फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी इज देयर इन द क्वांटम फील्ड। हम्म। उसी या उसी फ्रीक्वेंसी से जो जो मैं पिकअप कर रहा हूँ, जो मेरा पिनियल ग्लैंड पिकअप कर रहा है, वो उसी को अपने हिसाब से उसको इंफॉर्मेशन में ट्रांसलेट कर रहा है। Similarly, whatever I am saying, I am sending the signals out. Whatever you are receiving from these signals is the meaning that you are making out of that. तो बेसिकली मैं आई एम एक्टिंग एज ए ट्रांसमीटर आल्सो एंड रिसीवर आल्सो, राइट, दैट्स व्हाट यू आर Yes, सेइंग। that's how the brain works. ओके So ओके। what Joe Dispenza is talking about after doing all these researches with all the in alignment with all other scientists, उन्होंने आविष्कार किया कि ये काम जो होता है वो पिनियल ग्लैंड के थ्रू होता है। या सो इन इट सिंपल टर्म, जैसे हम दो लोग बात कर रहे हैं ऑन ए सर्टेन टॉपिक, ठीक है ना, हम्म जैसे मीटिंग में अपन बात करते हैं दो लोग, है ना, तो आई एम हम्म सेइंग यू आर रिसीविंग दैट इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पे यू आर सेइंग समथिंग एंड रिसीविंग दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इट करेक्ट। इज टू वेज, है ना। यस यस। या ओके, या तो गॉट ये इट। टू वे काम एक ही इंस्ट्रूमेंट करता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पिनियल ग्लैंड। तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है या जो भी मैसेज हम बाहर छोड़ते हैं, उस सब का केंद्र में पिनियल ग्लैंड ही है। ओके, so here we are and now I'm sharing the book and let's start reading. So here we go. Yeah, so let us start from here, जहाँ पे हमने एंड किए थे लास्ट टाइम। The reverse torus. So the energy moves from the unified field into the body. This picture is talking about, and the message is, as energy from the lower three centers is activated during the breath. Lower three centers मतलब what जो डिस्पेंसर is talking about कि हमारे शरीर में जो ये 7 चक्र हैं, उनमें से पहले 3 की चक्र की बात हो रही है, तो नीचे वाले 3 चक्र। As energy from the lower three centers is activated during the breath and moves up the spine to the brain, a torus field of electromagnetic energy is created around the body. As this energy moves from the lower to the higher chakras, ऐसे हमारे बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होते हैं। When the pineal gland becomes activated, a reverse torus field of electromagnetic energy moving in the opposite direction draws energy through the top of the head into the body from the unified field. तो जैसे नीचे से एनर्जी ऊपर जाता है, जब पिनियल ग्लैंड बीच में आ जाता है, तो व्हाट इट डज द ऑपोजिट। Since energy is frequency and frequency carries information, the pineal gland transduces the information into vivid imagery. ट्रांसड्यूसर का काम ही है किसी भी फ्रीक्वेंसी को एक ऑल्टरनेट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, जैसे एफएम रेडियो। सो इट इज पिकिंग अप द एफएम सिग्नल्स फ्रॉम द क्वांटम फील्ड अराउंड द सिस्टम, और उसको वो साउंड में कन्वर्ट कर रहा है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी उठा रहा है, उस फ्रीक्वेंसी का जो भी साउंड है, वही साउंड आप सुन पा रहे हो। दैट इज वाई you can listen to different FM channels. Same with TV signals, है ना। अलग अलग टीवी चैनल आप कैसे देख पा रहे हो, क्योंकि सबके अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। ऑल ऑफ देम, ईच ऑफ देम रादर
एक्टिवेटिंग एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. आप जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करते हो उसी फ्रीक्वेंसी को आप लेते हो, देन यू कन्वर्ट इट इनटू अ विजिबल फ्रीक्वेंसी फॉर अस. ओनली देन यू कैन सी इट, राइट? नहीं तो आप कैसे देख पाओगे? जैसे जो जो टेलीस्कोप्स होते हैं, बिफोर द रेडियो टेलीस्कोप्स केम इन, देयर वाज ओनली लाइट टेलीस्कोप्स, है ना, जिससे यू कैन ओनली सी विथ योर आईज. Now, when you want to see beyond that, you need to use other frequencies. So radio frequencies are frequencies which are being emitted by all these stars and planets and the constellations around us. और हर planet का एक अपना frequency है. And as humans discovered these radio telescopes, they started accessing those signals. उस सिग्नल्स को फिर हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसको हमने एक ऐसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया सो दैट वी कैन एटलीस्ट सी इट नाउ. सो वी नो, साइंटिस्ट्स नो कि हाँ, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे विजिबल आंखों से नहीं दिख रहा है, बट इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसीज. सो as science evolved, it created receivers for radio frequency, transducers for radio frequency, and we got to know अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ऐसा भी, अच्छा ऐसा भी, ऐसा भी है ना. अभी ये जो मून लैंडिंग जो हो रहा है, वो हम आंखों से थोड़ी देख पा रहे हैं कि वहां पे कौन जाके क्या कर रहा है. एवरीथिंग इज बीन कंट्रोल थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसीज. रेडियो फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल भी किया जा रहा है सो दैट यू कैन डू अ प्रॉपर मून लैंडिंग. सो कैन यू कैन इमेजिन ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी हमारे ग्रुप कैप्टन पहुंचे हैं, ऑल दिस नासा के जो साइंटिस्ट पहुंचे हैं, वो कैसे पहुंचे? द फ्लाइट इज बीइंग कंट्रोल्ड थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसीज. रेडियो फ्रीक्वेंसी वो हमारे विजिबल रेंज में है ही नहीं. सो दिस इज व्हाट जो डिस्पेंसा इज टॉकिंग अबाउट कि हमें कैसे पता चले कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है? थ्रू पीनियल ग्लैंड. that there are certain frequencies which we cannot experience through any other organs. That is what is being discussed in this chapter. कि it is beyond those frequencies जो आप अपने बॉडी के पांचों ऑर्गन से कनेक्ट कर सकते हो. And that's how we discovered that there is a huge range of frequencies. Okay, so this is what where we ended last week. यहाँ से शुरू करते हैं. And so who would like to get started? Should I? Pinaki, one quick question. How do you know what kind of frequency it is? Like how the pineal gland knows that? Just अभी पढ़ते हैं इसी चलो के बारे ठीक. में भी पढ़ते हैं. Yes, go ahead. You are at the right place at the right time with the right intention, with the right people, and with the right action. Okay, good. Let's go ahead. Who would like to read? Manish, Yeah, आप ही पढ़ो. I'm और reading. okay, okay, Sanjay, please go ahead. When melatonin gets an upgrade, magic happens. When your pineal gland is awakened because it is picking up higher frequencies. These higher energies alter the chemistry of melatonin. The higher the frequency, the greater the alteration. Just a minute. It is this translation of information into chemistry that prime. And these kind of mandalas are already there since time immemorial. That is the reason artists create these geometrical patterns. They are already existing since long. And one more thing I wanted to share here, that I talked about morphines. One post was there on morphines, and I talked about it previously. So morphines, or maybe some other name, or maybe I remember it as morphines. And these are the like geometrical, these kind of things, similar kind of things. I was witnessing when I was 8 to 12 years, or maybe something like that. And sometimes in between also I experience these kind of things with closed eyes, or maybe in the dark, or maybe
sometimes with open eye as well. And few other people also experience these kind of experiences. So you see beautiful designs rotating all around. So these are the information and frequencies. So previously we were not knowing. Very true. Very true. Okay, let's have some discussion. Yes, So please carry on. go ahead, yeah, Sanjana, you wanted to share something? So go ahead. Yeah, thank you, Pinaki. Thank you, everyone. And I just wanted to share an experience of pineal gland activation. A few years back, I worked with a child who was hyperactive and was not a good performer in academics. His behavior at class and as well as at school, home. Actually, I was working with a group of 10 to 15 students. All were of different ages, mostly were from 10 to 16 years, 17 years, yes. So when I started working on it, I was just working on the midbrain activation. So few practices I took with them, and after 4 to 5 days practices, they showed the different level of changes in their behavior. But one is more significant in that. That child was around 16 point, yes, above 16. And when I took the practices of midbrain activation, that was pineal gland activation. After that, he showed a remarkable change in his academics. He was below average student. He used to hardly pass in academics, and his behavior, he was just dull and lazy in the classroom. He was just sitting like and in mischiefs or he used to misbehave. After that, midbrain activation, those midbrain activation practices, he showed a good performance in exams during the after that during his exams he scored 80% in his academics. But that was not the only thing. That was the first one side of coin. For that, we have started working on mid-brain activation because I had heard that if we with the mid-brain activated, the students show a great performance in academics. So I was working in that with that mindset only. But those were the bonus things that when his parents came to me that after those practices, he is so well behaved, he is showing a maturity, he is becoming self-confident, and he is just he is showing all the good qualities like kind, he was empathetic and he was understanding, he was talking nicely, and his hyperactivity was controlled. Before that, he was hyperactive and it was very hard to make him sit for even a half an hour during the class time. But after that, he started listening. He became good listener. He became attentive. He got concentration, and his performance. I have already told you that he scored 80. The student who was scoring hardly 33% to get pass marks. So midbrain activation, and then he could see with the closed eyes even. He could read the words, he could recognize the colors even. That was the part of midbrain activation. And even by smelling, he could sense the currencies. He used to tell which note I have handed over to him. So these were the one side because the midbrain activation is associated with that only. But the pineal gland activation or midbrain activation, this can change our life. Now we have seen the thorax field when it changes when the thorax field is generated all around us through the when the pineal gland is activated. We are just trying to send some information in the space in the quantum field. That energy, as Pinaki has explained in the beginning itself, that was well explained. The entire pineal gland, सारा pineal gland खोल के रख दिया आज Pinaki ने. But I was just sitting
and listening with closed eyes कि क्या चीज है, and I could sense all the things. मैं वो सारा सारा साथ में फील कर रही थी कि कैसे मेरे अराउंड टॉरेक्स फील्ड बन रहा है, क्या हो रहा है, एवरीथिंग आई वाज जस्ट इमेजिनिंग. So we should start with some practices over it, and I last time I have shared that I am practicing on it, and I am going on with the I am just working on with some practices, and मैंने इसको combined किया है प्राणायाम्स के साथ. कुछ प्राणायाम्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ जिसमें मैंने इनको कुछ भी ऐड किया है. अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आई विल शेयर दैट, बिकॉज आई विल टुडे संडे आई विल रिकॉर्ड ऑडियो, बिकॉज अभी तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करती, कुछ पार्ट रिकॉर्ड किया था, दैट वाज नॉट अ कंबाइंड वन. सो यू वांट आई विल शेयर दैट कंबाइंड, एंड बिकॉज टाइम विल नॉट अलो, तो अभी तो हम उस प्रैक्टिस को नहीं लेंगे क्योंकि 10-15 मिनट्स इट टेक्स, but I will share the recording, and if you want I can take the practice now even. बस उसको मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैं उसको प्राणायाम के साथ ऐड किया. सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ, देन डीप ब्रीदिंग, और उसके साथ में मैंने ऐड किया है इंट्रिंसिक मसल्स को स्क्वीज करना. हमने लास्ट टाइम भी इस पे डिस्कस किया था कि हम जब अपनी मूलाधार और रूट चक्रा को साथ में स्क्वीज करते हैं तो उसको एक तो हम एक्टिवेट कर रहे हैं. जैसे अश्विन मुद्रा की बात हुई थी पिछली बार, आई थिंक सोमिता, हाँ यस, सोमिता हैज एक्सप्लेन वेरी वेल द अश्विन मुद्रा, हाउ टू स्क्वीज द इंटरसिंक मसल्स. अपनी पेरिनियल मसल्स को हम कैसे खींच कर ऊपर स्क्वीज कर कर होल्ड करें, फिर प्राणायाम के साथ उसको हम छोड़ते हैं. नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ उसको ऐड किया, फिर डीप ब्रीदिंग को साथ में मैंने ऐड किया उस प्रैक्टिस में, एंड देन फिर मेडिटेशन. मेडिटेशन के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आई विल शेयर विद दैट. वो बहुत वंडरफुल प्रैक्टिस है. और जब मैंने बच्चों के साथ लिया था तो वो अलग तरह से काम किया, तो कुछ फ्रीक्वेंसीज पे काम किया था. यस, फ्रीक्वेंसीज वर्क, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशंस की, उस पे मैंने कहा उसके साथ काम किया था. बच्चों के लिए थोड़ा अलग प्रैक्टिस थी, एंड वी ऑल्सो कैन स्टार्ट विद दिस कि जब हम मेडिटेशन का स्टार्ट करें इसका, तो उससे पहले कुछ हम बॉडी को स्ट्रेच कर लें, बॉडी को स्ट्रेच करें, एंड देन वी शुड सिट फॉर दैट मेडिटेशन, and within few days we will feel some changes, at least we will feel that. And one more thing I would like to add on here कि खाली pineal gland को हम डायरेक्ट एक्टिवेट करते हैं तो इट इज समवट समटाइम्स इसके कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं. बट हम सारे के सारे, क्योंकि जो जो डिस्पेंजा ने टेक्निक शेयर की है उसमें उन्होंने नीचे के चक्रस को साथ में काम किया कि उनकी भी एनर्जी ब्लॉकेज खुले. तो इसीलिए, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के एक्सपीरियंस देखे, मेरे आसपास के ही लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट जो है आज्ञा चक्र पे ही काम किया, थर्ड आई पे ही काम किया, तो दे हैड सम इम्बैलेंस, क्योंकि जब कोई भी चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है जबकि अनदर चक्र से, तो कोहेरेंस खत्म हो जाता है, कोहेरेंस गेट वेनिश. और कोहेरेंस नहीं होता तो बॉडी की सारी हमारी लाइफ की अलाइनमेंट ही डिस्टर्ब हो जाती है, एंड इट हैपेंड विद देम कि जब उन्होंने पर्टिकुलर एक चक्रा पे काम किया, बाकी चक्रास की ब्लॉकेजेस को खोलने पे काम ही नहीं किया, तो दे गॉट सम मिस अलाइनमेंट इन देयर लाइफ. सो द प्रैक्टिसेस जो डिस्पेंजा इज शेयरिंग, दैट इज एब्सोल्युटली रिजोनेटिंग विद दैट कि सारे चक्रास पे काम करो. पहले चैप्टर वाइज उन्होंने जैसे ब्लेसिंग ऑफ एनर्जी सेंटर, मैंने पीछे एक मेडिटेशन भी शेयर किया था चक्रा हीलिंग पे. आई हैव फर्स्टली आई हैव प्रैक्टिस विद दैट. मैं तो खैर चक्रा पे बहुत सालों से काम कर रही हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा फील नहीं होता कहीं है इन सेंस ऑफ दैट इज इट. When I was especially I was about to start the work upon my pineal gland, तो मैंने सबसे पहले कुछ दिन उसी की ही प्रैक्टिस की. अब मैं पिनियल ग्लैंड वाली की प्रैक्टिस कर रही हूँ. तो आई ऑफ कोर्स वी ऑल आर प्रैक्टिसिंग टुगेदर, तो आई रिकमेंड कि आप सब उसके साथ ही स्टार्ट करें. पहले एनर्जी सेंटर्स की ब्लॉक, मतलब सभी को अलाइन कर लें, एक बेसिक अलाइनमेंट तो हो ही जानी चाहिए सभी चक्रास की, सभी एनर्जी सेंटर्स की कुछ कुछ, और फिर हम किसी पर्टिकुलर चक्रा को एक्टिवेट करने का काम करें along with all chakra. So I will surely share with you all that practice is very soon. And once quantum field जो blessing the energy centers, वो मैंने already share किया था सभी से. I hope you would have I have shared with both the languages. So let us go ahead with the practices, or
लास्ट टाइम आप में से जो अश्विन मुद्रा की बात हुई थी, बहुत से लोगों ने किया होगा। अब अगली जो पीनियल ग्लैंड की एक्टिवेशन में आई वुड रिकमेंड कि आप खेचड़ी मुद्रा के साथ करें, यानी कि ट्विस्ट अपनी टंग को रोल करके अपने अपर पैलेट से टच करके कुछ टाइम के लिए लास्ट में करना है, प्राणायाम के बाद में। तो जब आप करें तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान में रखें और बहुत हेल्प मिलेगी आपको। हर क्योंकि पीनियल ग्लैंड जो है वो साइंटिफिक लैंग्वेज तो सिर्फ मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, बट योगिक और स्पिरिचुअलिटी में ये मतलब बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग चीज है। वो तो है ही है, तो इसमें एक बहुत ही हायर डायमेंशन सुपर नेचुरल बनाने का काम करने वाला ग्लैंड है हमारा आज्ञा चक्र जो है। तो इसको एक्टिवेट करना, आई थिंक हम सबको ट्राई करना, मतलब हम सबको अपने एफर्ट्स डालने चाहिए। थोड़ा सा शुरू में एफर्ट डालेंगे, फिर ये नेचुरल फ्लो के साथ रिदम इसकी बन जाएगी। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, दैट्स ऑल। नाउ whoever wants to share they can. Wow, that's an amazing experience sharing, Sanjana. Thank you, thank you so much. Would like to add next. कैसा एक्सपीरियंस रहा आप सबका, या पंकज कैसा एक्सपीरियंस रहा आप आज का सेशन? और मनीष? इट वाज गुड। मैं थोड़ा बाद में नहीं सुन पाया बिकॉज आई वाज आउटसाइड, तो बट इट वाज गुड। अच्छा, या थैंक यू। मतलब आई वांट टू सजेस्ट दैट अपन एक मे बी आई डोंट नो संजना, वी कैन क्रिएट अ वीडियो ऑफ ऑल द प्रैक्टिसेस दैट वी नीड टू एक्टिवेट आवर पिनियल Yeah, ग्लैंड। yeah, surely, Manish, I will share. And I think you were not in the group when I have shared the quantum healing meditation. तो उसको भी मैं आपको शेयर करती हूँ फिर से आज। एंड पीनियल ग्लैंड का आज जैसे संडे है, तो आई विल क्रिएट अ वीडियो फॉर श्योर दैट विद इन 1-2 days आई विल शेयर। मैं क्योंकि बीइंग टीचर तो मुझे बड़ा ना सिंप्लीफाइड वे में बात करने की मतलब हैबिट ही हो गई है। तो जब तक मेरे दिमाग में क्लियर नहीं होता बात, जैसे पिनाकी ने बात की, बहुत सारी क्वेश्चंस क्लियर हुए, बिकॉज पिनाकी बाल की खाल निकालता है, मतलब जब तक इसका निचोड़ नहीं निकाल दूंगा इसको चैन नहीं पड़ती है। तो उसने बाल की खाल निकाल के आज बिल्कुल ना क्लियर चिट्ठा खोल दिया पीनियल ग्लैंड का। बहुत सारी चीजों में काम कर रही थी, मैं भी कई दिनों से सर्च कर रही हूँ उसको। क्योंकि अब जैसे आप लोग, मुझे नहीं पता, सॉरी कि मैं आप लोगों को रीड करते हुए डिस्टर्ब करती हूँ, तो मेरा एक नेचर बन गया कि जब तक मैं रीड करके खुद समझ नहीं लेती मैं उसको आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैं आपको नहीं बता रही होती उसमें, मैं खुद समझ रही होती हूँ कि क्या बोल रहे हैं। और जब तक समझ नहीं आए तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं होता। आई जस्ट वॉन्ट वेरी नॉट, आई डोंट वांट टू मेक इट अ फॉर्मेलिटी ओनली। तो जब मैं वेरी रीड करती हूँ ना, मैं अपने आप को पढ़ा रही होती हूँ कि देखो, जैसे जैसे मैं अपनी टीचर बनती हूँ। आई एम माई ऑन टीचर, आई बिकम माई ऑन मेंटोर। तो मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर रही होती हूँ इसका मतलब ये है, और देन आई कोड। बिकॉज हमारा माइंड ना विजुअल्स को, इंसिडेंट्स को, हमारी लाइफ में जो हैपनिंग्स हुई उनको याद रखता है। तो मैं उसको कनेक्ट करती हूँ उन डॉट्स को। आज मैं सारा डॉट्स कनेक्ट कर पा रही थी उस बच्चे से जिसको मैंने हेल्प किया, कैसे उसकी लाइफ चेंज हुई। बाद में तक मेरे पास आता रहा कि मैम मैं अपनी क्लास के नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स में टॉप 10 में हूँ। जो बच्चा पास नहीं होता था, और उसमें मैंने बड़े हल्के फुल्के में इसको लिया। अब समझ आ रही कि जब उसने बताया ना कि, तो मुझे लगा कि कितनी वंडरफुल थिंग है। और अब चीजें सबसे और क्लियर हुई जब इस चैप्टर को रीड किया। मतलब हर स्टेप ना नई नई क्लैरिटी है, एक दिन में समझ नहीं आती ये चीजें। अब पूरे हम इतने महीनों से पढ़ रहे हैं, तो कुछ कुछ चीजें हर बार क्लियर। अभी भी हम, मुझे लगता है कि जब ये बुक दोबारा पढ़ेंगे या दोबारा इस बारे में रिसर्च, कुछ नए, इट विल ओपन न्यू डोर्स ऑफ विजडम। तो हर चीज, हर बार कुछ नया ऐड ऑन होता है। हर बार मैं एक नई चीज पिक कर लेती हूँ, कुछ 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 मेरे aha moments। तो थैंक यू सो मच पिनाकी, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ करके ना, बस दैट्स व्हाई आई डोंट मिस imagine मोर that थिंग। हाँ। I'm working with these two schools, and in one of the schools जो रिजल्ट हमें मिले एक साल में, which is phenomenal, like students in from class 8 to 12, ये स्कूल के भी हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ कि not a single child score in any subject below 60%. मतलब probably these are the techniques which worked when I talk to Yes. them, because I interact with them once a week
and physical interaction होता है, and so these are the things which happen, you know, like it's an amazing, आप इसको explain ही नहीं कर सकते कि ये हुआ कैसे. बिल्कुल सही। ये हुआ कैसे. And I use a lot of these techniques to work with them, to work with myself. पहले तो अपने ऊपर काम करना होता है to actually check whether these things really work or not. And very difficult to explain. Yes, Pankaj. हेलो। Yes. यस, अच्छा लगा पहली बार ज्वाइन करके। तो जस्ट मैंने सोचा कि बहुत दिन हुए तो एक बार ज्वाइन करके देखता हूँ। इट्स गुड एक्सपीरियंस। What did you find good about it? One, two sentences, कुछ something which तो really attracted your attention. जिस पे हम बात कर रहे थे, जिस ग्लैंड पे बात कर रहे थे, वो मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा, मतलब नहीं, बुरा पार्ट है, क्योंकि मेरी मम्मी को इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो हमने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा था, मतलब 2-3 साल तक इससे काफी फाइट किया था। दिस अ मेडिकल प्रॉब्लम थी, एंड इट्स मेक वाइट ब्लड सेल एक्सेस। तो आई थिंक बिफोर ऑलमोस्ट दिस इज 92 थिंक। तो 92 में इंडिया में जब तक इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं था, तो इसलिए मैं तो वहां घूम गया था थोड़ी देर के लिए। काफी टाइम तक तो मैं अपनी मम्मी के साथ ही रहा। तो इसलिए मैं समझ पाया, लेकिन बहुत, मतलब इसके बारे में मतलब बहुत समझा था तब, जब बहुत छोटा था मैं 92 में। तो 24 साल का था मैं तब तब की बात है। तो बहुत ज्यादा चीजें तो मेरी उस पे चली गई थी, इसलिए मतलब नहीं, सुनने की बजाय वो प्रोसेसिंग में चला गया था यूनिट पूरा ही। तो पहले एक पार्ट समझा था, जब मेडिकल इमरजेंसी में क्या इसका रोल था, कैसे क्या करता था ये बॉडी को, कैसे, मतलब मतलब जब एक्सेस बनता है तो कैल्शियम कम हो जाता है, तो बोन्स वीक हो जाती है, ऐसा कुछ होता था। तो वो सारी चीजें समझी थी। अभी उसका एक दूसरा रोल समझा कि इसका और भी काफी रोल है। तो आई थिंक दिस इज गुड। Superb. Thank you. थैंक Yes, यू। Pravina. Yeah, actually, there is a mention of the technique ayahuasca, which is done in Africa. So there are some videos even of Ranveer Alavadia. He tried this. The chemical dose is given, and you are all there is some hallucination, and you some movie run in your mind, and actually, the radio frequency, the station is that is for Akashvani. There is some channel, or for some movie songs there is another tuning. So you, if you tune that, so we all are tuning to the frequency that we want to learn about being supernatural. So we are all together. We are tuned to the same frequency, and the information is broadcasted in channel, and we are receiving that. And likewise, what we want to learn, we created the thought, and accordingly we receive the information. So that is transmitting information to the universe and receiving information from the universe. That's what from my side. Yeah, very true. इसमें आपको डूबना पड़ेगा, डूबोगे तो फिर डुबकी लगाना पड़ेगा। जितना आप डुबकी लगाओगे उतना आपको इसका पावर का एहसास होगा। Good, we had a wonderful session, and Yeah, let's close the session. It's 8:08 right now. Yeah, Manish, you want to add I something? want to add something. Yes, sure. my take on today's session, and anything related to that is, whatever you do, do it from the feeling of the heart. क्या है ना कि वो मास्टर की तो दिल के पास ही है, ठीक है ना। तो माय टेक इज दैट, यू नो, अलाइन एवरी एक्शन, एवरी मोटिवेशन ऑफ योर लाइफ विद द फीलिंग ऑफ द हार्ट, एंड यू विल फाइंड द स्ट्रेंथ, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि अ, हम मतलब अपने आप को झूठ बोल सकते हैं, पर अपने दिल को झूठ नहीं बोल सकते, है ना। वी कैन नॉट, यू नो, ओवरकम द फीलिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है ना। तो जब भी हम दिल से, हार्ट से, हम अपने हार्ट की जो रियल इमोशन फीलिंग्स हैं और उसकी जो वैल्यूज है उससे हम अलाइन करेंगे हर चीज को, तो यू विल फाइंड द आंसर टू एवरीथिंग दैट वी आर सीकिंग फॉर, बिकॉज हार्ट इज हार्ट knows more than what we know now. He knows the, you know, the strength inside you.
you know your true value of this life and what you want to desire. तो हम उससे connect करेंगे तो you know we'll get the answer what we are seeking. और वो will get the strength also because though जो उसकी energy है heart की it is very you can say very huge energy. So we should align our thinking, our mind with that energy, and it will do miracles. That's what I believe. Yeah, thank you. Brilliant. Thank you. Thank you. Yes, Shivani. I wanted to add this thing that this kind of meditation, this is a science, and this can be taught to up to 14, 15 years of kids. So one of my niece, she learned it long back, maybe 10 years, a decade back, and she was small then. Now she has grown up. So she was also able to blindfolded. She recognizes colors, and if you show her anything, who like person's name, colors, and on currency notes, how much currency is this? So all these kind of things she could recognize it blindfolded. And at that time, she informed that it is they do with some kind of meditation, and they teach these kind of things to kids. So I at that time my son was 2 3 years old, so I also thought that I'll teach him when he will grow up. But then I am not in that city and do not know. But and this one thing, one child who knows this thing, she came on this India Got Talent also, and the judges were surprised. So she could also do the same thing, like blindfolded, and she can recognize anything. Even then, like if you show write a number on a paper, she can recognize on currency notes. They can recognize how much currency is it, blindfolded everything, colors, and much more things. Wow. Brilliant. Even So, even putting cotton balls and then the black this thing, black belt. You tie up their eye and they tell. brilliant. Good. So, thank you for a wonderful session, for being here. A lot of new learnings for me. Again, game of vibrations. So, whatever my pineal gland could pick up from all your sharings and whatever it transduced into information for me is exactly what I got. So, keep on sharing from your life and let's stay connected. Join again in the next Sunday session. Bye. Thank you. Make your day amazing. Thank you so much. Same to you. Bye-bye. Bye bye, Bye everyone. bye. Bye, everyone.